Everyone, good morning. Today I welcome you in science, the part of electricity that what we have to complete. So we'll continue from today. Today we are working on numericals, that is numerical examples in physics. So we'll be working on that. But before that, before we start the numericals, we need to revise few part of electricity topic. So first of all, basically we started understanding electricity with the current formula. The current was Q by T, charge upon time. We need that in a regular questions as well. At the same time, V, that is potential difference, is equals to work done per unit charge to move. So that is nothing but V is equals to W upon Q. And one more very interesting and important formula we learned, that is R is equals to V upon I, which is Ohm's law, which you need every time now after this. Okay. At the same time, resistance is connected in parallel, which is R. Resistance is connected in series, that is RS, R1 plus R2 plus R3 and so on. And resistance is connected in parallel combination is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and dash 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 and so on. So as many resistors are connected in parallel combination, the combination can be calculated using this formula, and series combination, the formula can be this one, right? At the same time, you must know what remain constant in case if the connections are connected in series. Current remain constant. Okay, you need to know that when the resistors are connected in a series combination, the current always remain constant and potential difference of each one is different. PD is different. Okay, so what remain constant, once you understand, that's more than sufficient. And when it comes to parallel combination, PD remain constant and the current change on R1, R2 and R3, the current passing through R1, R2, R3 changes. This you need for numericals. This concept is very important. Every time you must know. Okay, so what remain constant in series combination? Current remain constant. And what remain constant in parallel combination is potential difference remain constant. So keep that in mind. Very important part. With that, you must know the units of all the quantities. So current measure in ampere, potential difference measure in voltage, your resistance measured in ohm, right? Of course, Q is in coulomb, time is in second, work done is in joule, and other things. That's it. So these are the few important units you must know before we solve the numericals. So that's it. This was a basic idea before we start the numericals I gave you. Now let's start understanding the numericals. So here we have your first question. Find the equivalent resistance when they are connected in a series and in the parallel, both. So first of all, let's talk about these two resistors are connected in series combination. Series means RS is equals to R1 plus R2, you know that. So it is going to be 3 plus 6. Answer kya aayega? 9 ohm. So this is the equivalent resistance. The first answer is done. Second answer, we need the equivalent resistance when they are connected in the parallel combination. Parallel in sense 1 upon Rp ho jayega. 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, which will be 1 by 3 plus 1 by 6. Of course, you need to multiply this by 2, this by 2. So answer is 3 by 6, which will be 1 by 2. Right? This is a big mistake that what I have seen students doing. They directly write 1 by 2 is answer, but in fact it is not the answer. 1 upon Rp is equals to 1 by 2. So therefore what will be Rp? The reciprocal of this, that is 2 ohm, is your resistances or combination of resistance when it is connected in the parallel combination. So you must have realized when the resistors are connected in a series combination, the resistance is quite high because we use the same resistors, that is 3 ohm and 6 ohm. It's like that. This is the series combination, this is 3 ohm and this is 6 ohm, and this is the parallel combination. You can check that, we have learned this. So this is 3 ohm and this is 6 ohm.
So when it comes to series combination, the resistance becomes higher. The value is quite high, that is 9 ohm. And when it is connected in a parallel combination, the value is reduced. You can check that. So if you want to reduce the value of the resistance, we have to connect it in the parallel combination, and if you want to increase, you have to connect it in the series combination. That's it. Okay, so it's a very simple idea, not a big deal. Next question देखते हैं. Okay, now this is a very very interesting and important question, I can say. So many times this category of questions are normally seen in the paper. So let us understand one by one all the questions. So first of all, A, I'll just solve it here. Find the equivalent resistance when they are connected as shown between A and B. So A and B are the 2 points where I have to find the resistance. So what I have to do here, I have to first of all check how are they connected, whether they are connected in a series combination or whether they are connected in a parallel combination. That I have to check, and accordingly I have to find out and reduce this circuit diagram to the smaller or simpler form. So how to do that, everything we will understand step by step, one by one. So first of all, you can understand this if I say it as R1 and this if I say as R2. R1 and R2 are connected in which combination? Parallel combination, exactly. So I'll write here R1 and R2 are in parallel. So therefore 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, which might be equal to 1 upon 8 plus 1 upon 12. The LCM of 8 and 12 is 24. So 8 3s are 24 and 12 2s are 24. So I get the answer 1 upon Rp is equals to 3 plus 2 5 upon 24. But as I know, I don't want to find 1 upon Rp, I need to find Rp is equals to 24 by 5. Which can be reduced maybe to the decimal. So 5 4s are 20 and 5 8s are 40. So 4.8 ohm is my answer for this combination. ये combination का answer जो है वो है 4.8 ohm. So now how I should reduce it? तो इसको reduce करने का तरीका क्या है? तो ये रहा मेरा 7 ओम का रेजिस्टर एंड ये टुगेदर इज रिड्यूस्ड टू गिव यू 4.8. तो ये हो जाएगा 4.8 ओम. सो डोंट यू थिंक आई रिड्यूस दिस 2 रेजिस्टर्स टू 4.8? very very clear idea, very very clear idea. So remember to reduce it, as at least as a rough work you will reduce it. Now this Rp which is here and this is R3 which is here are in a series. So what I can do, I can write as now Rp and R3 are in series, whatever. So therefore Rs is equals to R3 plus Rp. You can write R1 plus R2 as well, that's not the problem, because basically I'm not going to define this as in mathematics we do. Okay, we purposely define x and y. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. Okay, I have to just know the answer, that's it. So what is R3 is my 7 plus 4.8 and whatever 11.8 maybe is my answer for equivalent resistance of this question 1. Clear? I hope you are getting the idea. So this is how I have to understand the question. Clear? Chalo, I can go for the next one now. B question. चलो B के बारे में देखते हैं. You can also understand it. B में क्या है? At this point I have to find the equivalent resistance. ठीक है? तो I'll just call this as R1, R2, R3 and this as R4. ठीक है? सो डायग्राम को रिड्यूस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि वे किस कॉम्बिनेशन में. कैन यू जस्ट इमेजिन दैट कि R1, R2 एंड R3 में आई डोंट हैव टू लिफ्ट द पेन, सो दे आर इन सीरीज. सो यहाँ पे R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट? सो डोंट यू थिंक if they are in series combination I get Rs is equals to R1 plus R2 plus R3. Is it right? So isn't it that will be equal to 1 plus 1 plus 1, which would be equal to 3 ohm. So I have the resistances connected in a series combination together gives me
answer as 3 ohm. So as I said, we'll reduce it to the simpler diagram. How can I reduce it to the simpler diagram? ये है मेरा point A, ये है मेरा point B. ऊपर जाने के बाद मेरे पास 1 ओम का रेजिस्टेंस है विच इज़ 1 ओम, एंड उसके ऊपर जो है दैट ऑल हैज़ रिड्यूस टू 1 रेजिस्टर दैट इज़ 3 ओम. चेक कर लो. सो ऊपर वाला जो ये और R1 R2 एंड R3 टुगेदर कैन गिव मी 3 ohm resistance as it is seen here. So now 1 ohm and 3 ohm, how are they connected? They are connected in the parallel combination. So now I will be finding the answer with the parallel combination, like 1 upon Rp is equals to 1 upon 1 plus 1 upon 3, right? So it will be equal to 3 by 3. The answer is 4 by 3, but that is not Rp, that is 1 upon Rp. So what will be Rp is equals to 3 by 4. If you want, you can reduce it to simplest form, or this is the answer, final answer this time, right? Is this clear? Hope you are getting it, hope you are understanding. So after this I am not going to solve the question, but yes, I will give you the hint to solve the C and D question, so you can do that, no problem. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन राइट सी क्वेश्चन के बारे में देखते हैं. सी क्वेश्चन देख लो. फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको R1 कर दिया, इसको R2 कर दिया, इसको R3 कर दिया. तो R1 एंड R2 ये दो, isn't it, I don't have to leave the pen, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन. एंड विद दैट RS, जो RS होगा, ये RS एंड R3 विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन. जैसे B किया था वैसे ही है, सेम, बस ट्रायंगुलर है, यहाँ पे जैसे स्क्वायर जैसा था, दैट्स इट, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? ओके, लास्ट देखते हैं. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट डोंट हैव टू वरी, ईजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. देख लो. सबसे पहले ये दो पैरेलल लग रहे हैं, तो यहाँ पे Rp हो जाएगा. ये तीन भी पैरेलल ही है, तो यहाँ पे Rp हो जाएगा. तो ये एक Rp और ये एक Rp, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे सीरीज में है. तो ये पैरेलल और ये पैरेलल, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज. तो ये कैसे होगा, ये इसका पैरेलल का आंसर यहाँ पे ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, ये तीनों का पैरेलल यहाँ पे ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, और ये दो क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे. दैट्स इट, दैट्स इट. सो सिंपल आइडिया, सो वेरी सिंपल. ट्राई करो. कैलकुलेशन थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं बिकॉज थोड़े नंबर्स बड़े हैं, बट आफ्टर ऑल यू आर इन 10th standard, यू मस्ट नो दिस. स्टिल if you face any difficulty for this kind of questions, you can quickly send it to me. I will send the solutions to you, that's not the problem. ठीक है, डन, गॉट इट. चलो आगे बढ़ते हैं. We are working on physics, and let me tell you, this topic is completely based on numericals. That means this topic is for maybe 6 marks, and out of 6 marks I'll tell you 5 mark question will be completely based on the numericals only. Only 1 mark here and there you will get some questions of this topic, or derivation. Not derivation is not for 1 mark, but in case derivation comes, of course it will be for 2 mark or 3 mark derivation comes, but nothing other than that. It is all based on numericals. ठीक है, तो remember that कि you need to understand to solve the numericals. So let us understand the next question. Very very interesting. अभी हम लोग यहाँ से क्या करने वाले, हम लोग potential difference, current and everything we are going to connect in the circuit. So all that, how to connect, how to draw the circuit diagram, everything I will be teaching you. A lamp with resistance 20 ohm and conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery. That's it. देखते हैं पहले क्या करना है. एक ऐसे लैम्प कनेक्ट किया एंड कंडक्टर का रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया, मतलब कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस इतना है, ये कितना है 4 ओहम, और लैम्प कितना है 20 ओम. ऑल दैट इज नाउ कनेक्टेड टू अ सर्किट विद द 6 वोल्ट बैटरी. दैट मीन्स ये बैटरी जो है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ऑन द सर्किट अक्रॉस द सर्किट इज 6 वोल्ट. ये हो गया मेरा कनेक्शन. दैट्स इट, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल. कनेक्शन इज वेरी सिंपल, राइट? अभी फाइंड करंट. ओके, नहीं, पहले यहाँ पे देख लो, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिख के लेता हूँ. मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं. I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q एंड R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. तीनों के तीनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख लिए. ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओम्स लॉ. चलो पहले कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. रेजिस्टेंस क्या है, ये 2 रेजिस्टेंस है, उसका पहले टुगेदर रेजिस्टेंस फाइंड करना है. टुगेदर तो इट्स वेरी क्लियर, ये तो सीरीज में कनेक्टेड है. एज R1 and R2
are in series, we have Rs is equals to R1 plus R2, which will be 24 ohm. So what is total resistance of the circuit is 24 ohm. अभी करंट फाइंड करना है. करंट फाइंड करने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है, दोनों में से कौन सा यूज़ करना है देख लो. चार्ज के बारे में कुछ पता है मुझे? बिल्कुल भी नहीं. टाइम के बारे में कुछ पता है? बिल्कुल नहीं. तो ये फॉर्मूला तो डिस्कार्ड कर दिया. सेकेंड फॉर्मूला इज दैट रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. यस, वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस, वी हैव रेजिस्टेंस. तो करंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ. आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. रेजिस्टेंस कौन सा होगा? वेदर आई विल यूज 20, whether I'll use 4 or whether I'm going to use 24, you decide. Of course it's a complete circuit, so I cannot use individual resistors, I have to use complete current, right? So what will be the current of the circuit? To find that I have to use 24 ohm resistance only. So 24 is equals to potential difference तो 6 है, तो ये 6 हो गया upon I. तो I'll shift here 24 this side, तो I is equals to 6 upon 24. I know it's going to be very small, 1 by 4, which is 0.25 एम्पियर लिख रहा था मैं, पहले 5 तो लिखो. हाँ, यस, एम्पियर. तो दिस इज व्हाट माय करंट इन द सर्किट. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट द करंट इन द सर्किट. नाउ व्हेन इट कम्स टू करंट इन द सर्किट, देख लो, दिस करंट इज पासिंग थ्रू from positive to negative. So 0.25 ampere current is passing through the lamp. At the same time 0.25 only current is passing through the resistor. Why? Because the series combination, the current is constant. So as the current is constant, that 0.25 ampere current is passing through the lamp as well as from the resistor, right? Anyway, so that first question is done. Find potential difference across the lamp. As we all know, the potential difference across the lamp and potential difference across the conductor, this conductor, has to be different, because in a series combination current is same, current is constant, but potential difference is different, it is not constant. But yes, one thing is true, that the current is same. So for lamp I will check. For lamp what else I know? I know its resistance R is equals to 20 ohm. How much current is passing through the lamp? As it is in a series combination, current remain constant. So I is equals to 0.25 ampere. Right? Now I know R, I know I know I. So I can easily find out the potential difference. क्या होगा V? देख लो, V is going to be equal to, मतलब अपना Ohm's law use करते हैं, V upon I. Right? ये आ गया समझ में? So what is R is equals to? R is 20 ohm. Okay, V I have to find out upon 0.25. So if I shift this side, I get V across lamp. VL लिखता हूँ मैं. Okay, for your understanding. So 0.25 into 20, 5 volt. So how much is potential difference across the lamp? It is 5 volt. Find potential difference across the conductor. तो कंडक्टर के लिए भी करते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ. For conductor, how much is resistance for the conductor? It is 4 ohm. How much is current passing through it? 0.25 ampere. I can easily find out the V. तो R is equals to V upon I. R क्या है? 4 है. V क्या है? मैं पता नहीं है. I क्या है? 0.25. So it is 1 volt, right? तो V conductor, okay, मैं VC करता हूँ, is equals to 1 volt. यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो एक बार याद थोड़ा सा देख लो कि 5 वोल्ट आई गॉट इट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प, एंड 1 वोल्ट यहाँ पे, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, वो जो 6 यहाँ पे दिख रहा है. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस शुड रिमेन सेम. याद समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? गॉट द पॉइंट? तो ये याद रखो, वही इसलिए मैंने इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू that in the series combination what remain constant and what is going to change, that you have to keep in mind. Minimum what remain constant you need to know. Okay, so in series combination what remain constant? Current, and that we use for all. This current we used. Okay, so whatever is asked to find out, first of all what you have to do, find out the quantity which remain constant in this question. So that is very very important. Okay, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि ये सामने जो क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व करना है. आई एम ट्राइंग टू टेल यू द आइडिया दैट हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस. तो याद रखो, आफ्टर दिस यू मे नीड दिस, दैट वॉट एवर यू हैव टू फाइंड आउट,
First of all, constant quantity you will find out, and then what is required. That's it, a very simple thing. ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ. ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप कभी भी डिफिकल्टी फेस नहीं करोगे. तो लेट अस सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या है देखते हैं. A battery of 5 volt is connected in a series with the resistors 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm. How much current would flow through 12 ohm resistor? तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है. 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू 5 वोल्ट बैटरी. तो ये रहा मेरा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12. ठीक है. If they are connected in the series, can I find their equivalent resistance, that is RS I can find. So it is going to be 0.2 R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. That can be your, चलो लिखते हैं फॉर्मूला. R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. So it is going to be equal to 0.2 plus 0.3 plus 0.4 plus 0.5 plus 12. तो कितना आता है देखते हैं. 0.5, 1.0 plus 4, 0.4. तो 0. कितना आ रहा है यार, चलो देखते हैं. 0.2 plus 0.3 plus 0.4 plus 0.5. तो 5 plus 4 9, 9 plus 3 और 12 plus 2 14, 1.4. ठीक है, 1.4 आ रहा है. Okay, so this is 1.4 plus 12, so 13.4 ohm is your total resistance, right? ये बात समझ में आ गई. अभी मुझे क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू 12 ओम. तो पहले करंट ऑफ द सर्किट फाइंड करते हैं, मतलब पूरे सर्किट का करंट कितना होगा. रेजिस्टेंस इतना है, इसका वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट. तो मेरा ओम्स का क्या बोलता है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई. आर कितना है मेरा 13.4, V कितना है 5, आई मुझे फाइंड करना है. आई इधर आ गया, 13.4 इधर आ गया. तो व्हाट इज आई इज इक्वल टू 5 अपॉन 13.4 इंटू 10 इंटू 10. तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन. ठीक है, तो व्हाट इज दैट इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 134. ठीक है, आई कैन रिड्यूस इट टू सिंपलेस्ट फॉर्म. 25 अपॉन 2 7 77 ओम आ गया. ओम नहीं, एम्पियर, सॉरी. करंट है ना, तो इट इज इन एम्पियर. I may write in this form or I can convert it to decimal, there is no problem, but it's okay, that's correct. So 25/77 is my current flowing through the circuit. But one thing you know that it is a series combination. So in series combination what remain constant? Current remain constant. Okay, remember, so in series combination what remain constant? Current. तो current इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है और किसी में भी जा रहा है, it is going to remain same. So here the current through 12 ohm resistance is same 25/77 ampere. That's it. Isn't it very very simple है, बहुत ज़्यादा easy है, interesting है, मज़ा आता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है. 1 एम्पियर इज करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम रेजिस्टर. दैट मीन्स इसमें से जो करंट पास हो रहा है 5 ओम रेजिस्टर्स में, वो कितना है 1 एम्पियर. तो इसमें से जाने वाला जो करंट है ये है 1 एम्पियर. ठीक है, लेकिन ये सेम करंट इन दोनों में नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. तो करंट विल नॉट बी सेम थ्रू 10 एंड 15. इट्स वेरी क्लियर. ठीक है, लेकिन हाँ, यस, वन थिंग इज ट्रू, दैट इफ आई टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, देन ऑफ कोर्स हाँ, फ्रॉम देयर द करंट विल पास इज सेम. व्हाट इज द करंट थ्रू other two resistors and what is the PD across AB and AC? Okay, and what is the total resistance of the circuit? तो पहले total resistance फाइंड करते हैं. सबसे पहले करंट का यूज़ कैसे करना है ये देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. उसके बाद हम लोग कल देखेंगे ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. दैट मीन्स ये आ गया मेरा 5 ओम रेजिस्टेंस, और इन दोनों की जगह पे इफ आई नीड ओनली 1 रेजिस्टेंस देन व्हाट दैट विल बी, तो वो चेक करते हैं. इट इज इजंट इट दैट इज गोइंग टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो RP 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस
1/15 ऐसे कुछ तो होगा, राइट. 10 के टेबल में 30 है, 15 के टेबल में 30 है, तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो इट इज़ गोइंग टू बी 5/30. तो व्हाट विल बी RP इज इक्वल्स टू 30/5 which is 6. So I have 6 ohm resistance here. Now how much current is passing through 5 ohm? It is going to be 1 ampere. So from 6 ohm it is also going to be 1 ampere. बात समझ में आ रही है? So now I have 1 ampere current passing through both the resistors. ठीक है? Is this clear? Now what I need to find out the PD, because देख लो, if I want to find out the current through other two resistors, I found it. It is 1 ampere. ओके, सेम ही करंट पास होगा लेकिन टुगेदर. अलग अलग देखेंगे हम लोग कैसे आएगा, व्हाट दैट आंसर विल बी, दैट विल सी लेटर ऑन. बट एक बात तो समझ में आ गई कि दोनों में से कितना करंट पास हो रहा है, ओनली 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू टुगेदर बोथ द रेजिस्टर्स. अभी सेपरेटली देखते हैं. उसके पहले हम लोगों को पहला रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा. जैसे RS इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा. व्हाट इज इट, 5 + 6 विच इज 11 ओम. ये बात समझ में आ गई. So total resistance of the circuit कितना है, 11 ohm है. And how much is current passing through circuit, 1 ampere. So ohms तो क्या बोलता है, R is equals to V/I. R मेरा कितना है, टोटल करंट कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 11. V कितना है मेरा पता नहीं, एंड I कितना है 1. तो isn't it 11 into 1 is 11 is equals to my potential difference. So 11 volt is a potential difference of the circuit, complete circuit, not separate circuit. ठीक है, 11 ohm is my total potential difference of the circuit. ये बात समझ में आ गई. Is this clear? अभी मुझे क्या करना है, हमने क्या क्या किया, ये कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर दिया विच इज़ कहाँ गया यार, 11 ohm यहाँ पे कर दिया. PD अक्रॉस AB फाइंड करते हैं. ओके, PD अक्रॉस AB, PD फॉर AB में कितना है ओम रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू, तो यहाँ पे R लिख लो, R कितना है 5 ओम. PD फाइंड करना है, मतलब मुझे I पता होना चाहिए. I कितना है, मतलब करंट कितना पास आ रहा है उसमें से 1. तो आई कैन इजीली फाइंड आउट PD है, V इज इक्वल टू, तो R इज इक्वल टू V/I. R कितना है मेरा 5, V कितना है पता नहीं, I कितना है 1, तो V विल बी इक्वल टू 5. दैट्स इट. क्लियर, गेटिंग इट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. Okay, so that's it. It's a simple idea, very very simple idea. Ohm's law is a base for everything. ठीक है, आज के दिन, so that you need to revise your previous concept, you have your all whole lot of thing to do, remember the formulae and solve. हम लोग यहाँ तक रुक जाते हैं. Right now I'm telling you, take your pen and pencil. अभी don't be lazy, don't be lethargic. Right now take pen and pencil, get your notebook and complete these questions all by yourself. If you don't understand, look at the video again, okay, and then you can solve it. Lekin unless until you practice these questions, you will never able to get this, okay. And one thing you remember, I was not interested in taking this electricity topic because of this only. It becomes difficult to understand. This part of numericals becomes normally difficult to understand. ठीक है, in case if you're not getting it, as soon as we begin our regular classes, we are again going to take this part, this numerical, especially in terms of revision of physics. So don't worry, but don't be in that mood कि later on we are going to do it. You have to understand all by yourself. So take some responsibility and get it done. Okay, today you will be sending all these 5 questions to me at any cost. Today you are going to send all these 5 questions to me, solved one with properly presented with the circuit diagrams and everything. ठीक है, तो thank you so much, bye bye, see you tomorrow.